Prime Minister Narendra Modi today said Amravati is on the way to becoming a people's capital, adding that both Andhra Pradesh and Telangana will reach new heights if they work together. Congratulating the people and the Andhra Pradesh government for their new capital, Prime Minister Narendra Modi said it was an important step for the state. He said the state of Andhra Pradesh is taking a very important step. The way N. Chandrababu Naidu took up work on this and integrated whatever is best across the world, he must be congratulated, he added. पिछली सरकार की कुछ ऐसा करके गई है कि जिसके कारण आंध्र और तेलंगाना के बीच हर हमेशा कोई न कोई तनाव के कारण बने रहते हैं. గత ప్రభుత్వం పోతూ సమస్యలను పరిష్కరించకుండా జటిలం చేసిపోయింది. అందుకని అప్పుడప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ మధ్య సమస్యలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. लेकिन अब समय की मांग है कि हम आंध्र और तेलंगाना, चाहे आंध्र हो चाहे तेलंगाना हो, हमारी आत्मा तेलुगु है. ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ కానీ మన అందరి యొక్క ఆత్మ, తెలుగువారి అందరి యొక్క ఆత్మ ఒకటే, తెలుగువారి అందరూ ఒకటే, తెలుగువారి ఆత్మ ఒకటే. और इस तेलुगु आत्मा की दो भुजाएं हैं, एक तेलंगाना एक आंध्र, और दोनों इतनी प्रगति करें, दोनों एक दूसरे को इतने पूरक हो कि हिंदुस्तान की शान बढ़ाने में ये हमारी शक्ति बनी रहे. The Prime Minister also took the opportunity to laud the initiative taken up by Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu to include his Telangana counterpart K. Chandrasekhar Rao. Prime Minister Narendra Modi earlier laid the foundation stone for Andhra Pradesh new capital Amravati in Guntur district. जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तभी देश में 3 नए राज्य बने थे. 3 राज्यों का विभाजन हुआ था, लेकिन कोई कटुता नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई लहू नहीं बहे, और बाद में भी कोई संकट पैदा नहीं हुआ. मुझे आंध्र और तेलंगाना के बीच में भी वही स्थिति लाने का प्रयास करना है. Prime Minister Narendra Modi also participated in rituals for foundation laying of the new capital for the state. Amravati is set to become Andhra Pradesh new capital after 18 centuries. भारत सरकार और चंद्रबाबू के बीच में फ्रीक्वेंसी इतनी मैच होती है, काम करने में एक दूसरे को समझने में इतनी सुविधा है, और उसके कारण सरकार बनने के बाद जो पहला ध्यान दिया गया वो हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर दिया है. आंध्र के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक कैपिटल कैसे बने, उस दिशा में हमने ध्यान केंद्रित किया है. Powered by NNIS.